Hello everyone, I am Priya Rohila, TGT Natural Science of DOE. In our previous video, I gave you an introduction of Chapter 6, Life Processes. Today, we will be discussing another topic, Nutrition in Plants of that chapter. Okay, so let's start. All green plants are autotrophs. They synthesize their own food. It means द प्लांट्स वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज़ द प्रोसेस by which green plants and certain organisms transform light energy into chemical energy. So, food is the main source of nutrients, and if we are talking about nutrition in plants, it means we have to talk about the process of photosynthesis first, because इसी process से food prepare करते हैं plants. So we first discuss the site of photosynthesis. Let us see. This is the cross section of leaf. So leaf of the plant, they contain chloroplast, and chloroplast are seen, they are green colored plastids. Okay, so plastids हमने 9th class में पढ़ा है. They are the small organelles present in the cytoplasm of the plant cell. Now let us see the cross section of leaf. This is the upper epidermis. This is the lower epidermis. Upper epidermis is protected by the waxy cuticle. Okay, it protects the upper epidermis. Below the upper epidermis, parenchymatous cells are present and they are loosely packed. Okay, and this green color circles, if you are able to see, these green colored organelles, they are known as chloroplast. And why they are green in color? Because they contain chlorophyll pigment. That is why they are green in color. If the plastids do not contain any colorful pigment, then they are known as leucoplast. So let us see the structure of chloroplast now. This is the structure of chloroplast. It is a double membrane bound cell organelle. They have their own DNA material. Structural unit of chloroplast is thylakoid. See, this one bag-like structure is known as thylakoid. Thylakoids are arranged in piles and they are then known as grana. Okay, this is one grana. Now, thylakoid of one granum, granum is singular form, granum is connected to another grana with the help of stroma lamellae. They are interconnected by stroma lamellae. Okay, so the chlorophyll pigment is present in this thylakoid. ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जैसे हम कॉइन को एक के ऊपर एक रखकर एक पाइल बना देते हैं, इसी तरीके से दे आर अरेंज्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, और उन बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. नाउ लेट अस सी what is the function of chlorophyll. So let us understand the function of chlorophyll pigment in the process of photosynthesis. So there are following events which occur in the photosynthesis process. First is absorption of light energy by chlorophyll. So first function, the function of chlorophyll is the absorption of light energy. Secondly, what happens? Conversion of light energy to
Chemical energy is ATP, adenosine triphosphate, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. तो ये जो प्रोसेस है, सेकेंड स्टेप जो होगी, इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज light reaction. Now the third step is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Carbon dioxide is another raw material required for the process of photosynthesis. तो थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन. बट डार्क रिएक्शन डजंट मीन कि ये लाइट की एब्सेंस में होती है. ये डार्क रिएक्शन इसीलिए है बिकॉज दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी टू अकर. ओके, लाइट एनर्जी नहीं चाहिए इस रिएक्शन को या रिडक्शन के लिए. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डार्क रिएक्शन. ऐसा नहीं है कि ये लाइट की एब्सेंस में मतलब रात में होगा. ओके, ये साइमल्टेनियसली होते हैं, फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज थ्री इवेंट्स they occur during the process of photosynthesis. So now let us summarize the reaction of photosynthesis. Carbon dioxide, water, these are the raw material for the process of photosynthesis. They combine together in the presence of sunlight. The chlorophyll pigment, they trap the sunlight and convert these two material into glucose and oxygen gas is released. So this reaction is very, very important. Now I have told you that carbon dioxide is a raw material. ये raw material है photosynthesis के लिए. water raw material है photosynthesis के लिए. water कहाँ से आएगा? water is absorbed by the roots of the plant. Then they are transported by the xylem or phloem? Xylem. Then water is transported by the xylem tubes to the leaf and other parts of the plant. Phloem क्या transport करता है? 9th class में हमने पढ़ा है, phloem transports food and minerals. Okay, तो water जो है which was absorbed by the roots is then transported to the leaves of the plant. वाटर पहुंच गया. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ट्रैप्ड और इट डिफ्यूज इनटू द लीफ ऑफ द प्लांट बाय द स्टोमेटा. ओके, स्टोमेटा इज द स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. अब यहाँ पर पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बता देती हूँ, देन वील डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. व्हाट इज स्टोमेटा एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? सो दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन अ लीफ, मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस. ऐसा नहीं है सिर्फ लीफ पर ही प्रेजेंट है. वो जो स्टोमेटा हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दी स्टेम, रूट्स, ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द प्लांट, बट लीफ पर मेजरली दे आर प्रेजेंट. ओके, लीफ पर भी दे आर प्रेजेंट ऑन दी अंडर सरफेस, मतलब वेंट्रल साइड पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ये हमारा वेंट्रल साइड होता है और ये डॉर्सल साइड है. तो लीफ ऐसे है, तो लीफ के अंडर सरफेस पर यहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और इस सरफेस पर स्टोमेटा कम होंगे. ओके, नाउ ईच पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल. सी दिस डायग्राम.
This is a stomata, stomatal pore. This is a stomatal pore. Okay, it is guarded by bean-shaped guard cells, and surrounding the guard cells are accessory cells. ये एक्सेसरी सेल्स कैसे हेल्प करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. Guard cells, they can change their shape to open and close the stoma. How can they help in opening and closing of stomata? ये guard cell क्या करते हैं? When during photosynthesis the plant requires carbon dioxide. Okay, so at that time जो guard cells हैं, they absorb water from the accessory cells. Okay, the water it diffuse into the guard cell from the accessory cells, and guard cells they get swollen up और वो फूल जाते हैं. By this process the stomata gets open. ठीक है, अब यहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो गया. अब क्या हुआ बेटा, अगर स्टोमेटा ओपन ही रहेंगे तो देर विल बी लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, सो व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, दे क्लोज द पोर. हाउ डू दे क्लोज द पोर? The water which was inside the guard cells, it diffuses out of the guard cell. ये guard cell से water by the process of osmosis, ये guard cell से water बाहर आ जाता है. Then the guard cell becomes flaccid, पतले हो जाते हैं और वो आपस में चिपक जाते हैं. By this process the stomata gets closed. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा. सो लेट अस सी द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा हेल्प्स इन gaseous exchange during the process of photosynthesis, and secondly transpiration में हेल्प करते हैं स्टोमेटा. लॉस ऑफ एक्सेस वाटर मेनली थ्रू द स्टोमेटा. ठीक है, एक्सेस वाटर जो होता है ना प्लांट को अगर हो तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा से इवेपोरेट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो सिर्फ प्लांट को चाहिए. प्लांट नीड्स मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. सो वो कैसे मिलते हैं प्लांट्स को? लेट अस सी. Other material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium, they are also building blocks of the plants. They are absorbed by in the form of a solution by the roots from the soil. Okay, the nutrients which are present in the soil, they get diffused into the roots. ठीक है, वो roots water के साथ absorb कर लेता है. And nitrogen is taken up by the plants in the form of nitrates and nitrites. तो नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए for the synthesis of protein. So this is how the plant takes up all the nutrients, water for the repairment, growth and maintenance of their body. होपफुली आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट समझ में आया होगा. स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. थैंक यू.